A very good evening to one and all. It gives me an immense pleasure to heartily welcome Mallikarjunji Karasgi sir, the Director of National Service Scheme, NSS Department of Swami Ramanujit Marathwada University, Nanded. Sir is as a chief guest for the valedictory section of this long time going on national seminar series on National Education Policy 2020. I am very much thankful to the Honorable Chairperson of this valedictory session, Dr. B.R. Bodke sir, the Principal of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon, for chairing the session as a chairperson of the valedictory session. I am very much thankful to Dr. B.G. Chavan sir, the Vice Principal of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon, as the special presence of this national seminar series. I am very much thankful to the resource person of this today's session, Dr. Smita Sable ma'am. Ma'am is working as an assistant professor at Abasaheb Magar Mahavidyalaya, Pune. I am very much thankful to all the dignitaries, those who have presented here. Today is the last session of this long time going on national seminar series. Since the beginning of the first session, we have listened very honorable, respectable resource person, and they have given their valuable talk on National Education Policy 2020. Now, today we are having one of the most important resource person, Dr. Smita Sable ma'am, for this session. I am very much thankful to Dr. Smita Sable ma'am for accepting our invitation as a resource person for valedictory session. Ma'am is working as assistant professor of microbiology at Anna Saheb Magar Mahavidyalaya, Pune, Maharashtra. She has completed her graduation and post-graduation in microbiology from University of Pune from 2014. She has also cleared the state eligibility test conducted by University of Pune in 2014. Ma'am has cleared her national eligibility test NET in 2019, which has been conducted by UGC, and she has awarded PhD degree from Solapur University in microbiology. She has published more than 20 research papers in renowned research journals and Scopus indexed journals. She has participated in more than 20 in international as well as national conferences, and she has presented a very Scopus indexed research papers in these conferences. Ma'am has given her given a talks as a resource person at various colleges and in conferences. Not taking much time between you and her, I heartily welcome today's honorable resource person, Dr. Smita Sable ma'am, to deliver a speech on national education policy, challenges and opportunities. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes, welcome, ma'am. So now I will share my PPT. Yes, ma'am, you can share. Yes. Now is it visible to all? No, no, ma'am. Just please share this your screen. You haven't shared till. Okay, okay.
Is it visible to you, sir? No, ma'am, no. You haven't shared. Please click on the green share button. Now then you can. Yes, I will do it, but still it was not working. Wait for 2 minutes. Okay, ma'am. Okay, no problem. Word. Is it visible, sir? No, no, ma'am. It is not visible. Okay, be relaxed and just share. Be relaxed. Otherwise, send it to me on my WhatsApp. I will share. Smita, Okay, ma'am. okay. Send it on my WhatsApp. I will share. Yes, ma'am. You can proceed. I have shared your PPT. Hello, Smita, ma'am. Hello. Hello. Smita, ma'am, you can share now. Please talk. Okay, now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So, respected on a dais, that is board guest sir, chief guest our Karasgikar sirs and Chavan sir, Swami sir, thank you so much for such a giving interesting opportunity for about new education policy 2020. So we have already heard about the education policy that was established in 1968 and 1986. Now these new education policy was just established in 2020. Why? What is the reasons behind that, and why these education systems are getting changed? So we will discuss about this. So next point is that, sir, next slide, please. So what was the highlights about this new education policy in 2020? Why they are deciding these new education policies?
So that was a universal access for at all level of schooling systems, like pre-primary schooling systems to the grade 12 schooling systems. They have to maintain this early childhood caring about the educations in between, ranging between 3 to 6 years, and they have focusing these education systems. That was old education system was modified into 5 plus 3 plus 3 plus 4. So there is no difference between such like a arts and science community. So they have to build up the students having the every subject is focusing on their knowledge base according to their knowledge and area of interest. So next slide, in they are specially focusing on national missions on foundations of literacy and numeracy. So what was the area of main course about this NEP 2020? They are producing multilinguality. Means what they are focusing, they are providing student knowledge according to their mother tongue. So therefore they can easily identify or they can easily understand what was the knowledge in the books. So these are the policies and these are the specially highlighted points for based on this NEP 2020 are organized. So next point is that what was the key principle behind this NEP 2020? So next slide, please. So especially in the area of student emphasizing the conceptual understanding, means student को अच्छे से ज्ञान मिले, उनको समझ में आए. So according to that, they are be creative and they have the technical knowledge. So therefore they didn't get the barrier about this language. So therefore we are focusing to build up our student in a such a way that they have to be in a spatially knowledge based problem solving approach, and they have to tackle their life problems also. So nowadays we are facing such a problem. Students are facing such a critical problems. They are didn't get any subject, so therefore they are criticize themselves. अगर उनको एक आधा सब्जेक्ट समझ में भी नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं उस रिलेटेड, मतलब टीचर के साथ मतलब टीचर के साथ उनकी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, फिर वो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उनका उन पर इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और अल्टीमेटली दे डोंट नो अबाउट द नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट. सो they are just learn it, means they are just doing rote learning type of knowledge, and they are doing this process and they crack out some exams, but they don't have that much knowledge about that subject. Therefore the principle is behind that they have to understand the subjects and make it more creative and technical. So therefore NEP 2020, next slide, they are just modify this system 10 plus 2 into 5 plus 3 plus 3 plus 4. So what about this 5 plus 3 plus 3 plus 4 systems? First of all is 5 year, that is foundational course. After that, there is a formation of preparatory stage, means 3 years preparatory stage. After they are modified 3 years middle stage, and later on they are forming secondary stage, that is multidisciplinary stage. What is that? Next slide, please. So in the foundational stage, actually it was a 5 years, means the preschool period between the 3 year students, like the having the age 4, 5, 6 years. These students have enrolled in any Anganwadi or Balvatika. So therefore they can get the knowledge about how to learn any games, toys. They can even handle the some having the color based background shapes, alphabets. So therefore they don't have any exams in this stage and they don't have any uniform code. Nowadays आपको तो पता ही, अभी छोटे बच्चों को हम अगर प्राइमरी स्कूल में भी छोड़ने जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव अ यूनिफॉर्म. मंडे का अलग का यूनिफॉर्म होता है, वेडनेसडे का अलग होता है, पीटी पीरियड का अलग होता है, और स्कूल के बहुत सारे डिमांड भी होते हैं लाइक दैट कि मतलब आपको टिफिन में इस मंडे को ये ही चाहिए. मतलब आप अगर सब्जी रोटी दे रहे हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे आपको स्नैक्स देना है, फिर कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स देना है, कुछ टाइम सैलड्स देना है. तो सच अ ड्यूरेशन पेरेंट्स आल्सो फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी जॉब में होते हैं तो उनको ये सारा प्रिपरेशन करके स्टूडेंट मतलब अपने बच्चों पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं. तो उसमें हो क्या जाता है कि पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है.
तो मतलब पेरेंट को भी एक तरह का प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो टीचर ने बताया है एट द एज ऑफ दिस 3 to 5 years दे कैनॉट बी कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट। मतलब बच्चों का प्रोजेक्ट भी माँ बाप को ही करना पड़ता है। तो इस सिस्टम में माँ बाप सीखते हैं, लेकिन बच्चे उसके रिलेटेड कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है, अगर एट द एंड ऑफ उनकी एग्जाम आती है तो दैट वाज प्रेशर वाज जनरेटेड बाय पेरेंट टू स्टूडेंट। मतलब एक बार पेरेंट को प्रेशर आने लगता है, उनका एग्जाम है, इतने मार्क्स आने चाहिए, फिर उनका कंपटीशन बढ़ता है और वो बच्चों को डांटने लगते हैं। तो उसके हिसाब से अंडर प्रेशर स्टूडेंट कैन नॉट लर्न। तो वो क्या करने लगते हैं, रटने लगते हैं और मतलब रोट लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रोट लर्निंग दे गेट डिफिकल्टी इन फ्यूचर लाइफस्टाइल। तो दे डिडंट गेट एनी नॉलेज बट दे कैन जस्ट नो द थिंग्स। तो उनको बस थिंग्स मालूम पड़ती है, लेकिन उसके पीछे का नॉलेज क्या होता है, वो कहाँ यूज करने चाहिए, वो उनको समझ में नहीं आता है। सो दिस फाउंडेशन स्टेज दैट इज 3 year. Later on, next is that, next slide please. नेक्स्ट 2 year, मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में अगर बच्चे जाते हैं, सो स्टिल देर इज नो एग्जाम, सो देर इज नो पेरेंट प्रेशर, पीयर प्रेशर्स टू दैट child. That was considered by this 5 year foundation course, and that was good. Now you are thinking like that कि अगर एग्जाम नहीं है, अगर बच्चों को एग्जाम नहीं देंगे तो that was create a difficulty. So what is the criteria that was selected by NEP 2020 for build up our child? So next slide is, सो दे कैन हेल्प टू डेवलप देयर क्यूरियासिटी। तो यहाँ पे अगर बच्चों को एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा तो दे डेवलप देयर क्यूरियासिटी। तो उनको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनके आंसर वो ढूंढना खुद स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से दे बिल्ट अप देयर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। into that they have developed some arts, craft or music, so they can interact very well. In these durations we can teach them how to interact with our elder ones। मतलब ग्रैंडपा के साथ कैसे बिहेव करना है, ग्रैंडमा के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने छोटे भाई के साथ बिहेव करना है। दिस ऑल थिंग्स कैन बी लर्न इन दिस सिचुएशंस एंड दे डोंट हैव एनी प्रेशर, देयरफॉर दे कैन लर्न वेरी इजीली। मतलब हंसते खेलते रहना चाहिए, इस तरह का इनका सिस्टम बन जाएगा एंड दे गेट मोर नॉलेज इन दिस ड्यूरेशंस। सो दे हैव टू नो, उनको हमें अभी इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि हमारा नेचर क्या है। तो ये छोटे ड्यूरेशन में अगर आप उनको एक छोटी सी चीज भी बता देते हैं तो दैट वाज केप्ट इन माइंड लाइफ लॉन्ग। सो देयरफॉर दीज सिस्टम्स, दीज एज ग्रुप्स हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर बिल्डिंग अप अवर चाइल्ड। सो इसी हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्ट अप दैट 5 year फाउंडेशन कोर्स, एंड दैट इज स्पेशली to maintain, or that is especially to increase their brain and their curriculum activity. Okay, now the next slide is that. So preparatory stage, that is 3 year stage, that starts from that is age group about 9 to 11 years। मतलब यहाँ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे। सो दे आर स्पेशली टीच इन देयर लैंग्वेज, मतलब उनकी जो लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में हम उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सो दे डोंट हैव एनी मीडियम बैरियर। नहीं तो ऐसे होता है, अगर इंग्लिश स्कूल के हैं तो मराठी, कन्नड़ा और तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा साइड के जो जिनकी मदर टंग होती है, दे डिडंट अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्योंकि घर में अगर एक मदर टंग यूज की जाती है और कॉलेज में और स्कूल में उसका अगर डिफरेंस हो, तो दे डिडंट अंडरस्टैंड एंड दे डिडंट गेट दैट नॉलेज। Therefore, these education systems provided language according to their mother tongue. So यहाँ पे स्पेसिफिकली लैंग्वेज के उनके मदर टंग में ही उनको वो भाषा में ही उनको नॉलेज दिया जाएगा। सो दे गेट अंडरस्टैंड एंड इट विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड देयर knowledge. So next slide is that the middle stage, that is 6th, 7th and 8th standard. In this also, at the age group of 12 to 14 year students, we are focusing to develop their technical knowledge plus their computer skills. So therefore they can understood the computer skills and plus they have know to the technical knowledge and vocational knowledge. So in this education system, we have also side by side, they have kept a optional language, that is Sanskrit, Marathi, Kannada, etc. So according to that, they can
लर्न 2 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे वो 2 लैंग्वेजेस लर्न करेंगे, जिसकी वजह से उनको फायदा मिलेगा, और इसकी वजह से उनको मतलब टेक्निकल और कंप्यूटेशनल नॉलेज की वजह से दे कैन ग्रो एंड दे कैन अंडरस्टैंड द ऑल द थिंग्स. So this is the very interesting thing, and they have a 10 days internships in these durations. Therefore, they can interact also external environment along with their school knowledge. So this is beneficiary, that is middle stage. Now the next point is that the secondary stage. In this stage group, we are focusing specially 9 to 12 class students. So in this, we are preferring them semester based education systems. And in this stage, they have a multiple subject. So they are not specially oriented about this maths, biology, sociology. So according to their knowledge, they get the informations and they can top up that college or top up that subjects according to their knowledge. For example, if they having weak in if they having weak in maths, तो according to that, अगर उनको maths आती नहीं है लेकिन वो social science में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है और वो बहुत अच्छे से मराठी और हिंदी में काम कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर एरिया ऑफ इंटरेस्टेड वो सेपरेट आउट. और कुछ बच्चे अगर ऐसे हो जिनको साइंस मैथमेटिक्स अच्छे से आती हो, तो अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो सेपरेट आउट. सो यहाँ पे अगर 9th 10th पे आते हैं तो मतलब पेरेंट्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि मेरे बच्चे को जाके आगे इंजीनियरिंग ही करना है, एमबीबीएस ही करना है. तो ये करने से अच्छा है कि वो थोड़ा सा मतलब उनको पता चले कि उनका बच्चा किस ट्रैक पे जाना चाहता है. कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ आर्ट्स में बहुत आगे जाते हैं लेकिन पेरेंट उनको प्रेशराइज करके साइंस स्ट्रीम में लाते हैं, और फिर आगे जाके वो जैसे ही 11th 12th में आते हैं तो उनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे उनके मार्क्स भी रिड्यूस होने लगते हैं, और इसका इम्पैक्ट उनके मतलब जॉब पे आता है. तो ऐसे ना हो, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि एट द एज ऑफ 9 to 12 दे नो what is their area of interest. So that was the secondary stage of this education system, that is NEP 2020. The next slide is that. Next slide, please, sir. Okay. Higher education structure. यहाँ पे अभी देखा जाए तो we are providing degree program course about 3 to 4 year durations. So here the student can get certificate after completing 1 year, that is certificate course. If they are doing 2 year course, they get diploma. After completing 3 years, they know to get it, that is bachelor degree. अगर वो 4th year का कोर्स करते हैं, that is multidisciplinary course. So यहाँ पे देखा जाए तो एक बेनिफिटरी पॉइंट दे हैव पुट इट, दैट इज ABC सिस्टम, दैट इज एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया है तो आप उस कोर्स को जो कोई भी क्रेडिट है वो यहाँ ABC बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे आप ABC सिस्टम में डिपॉजिट करेंगे और किसी वजह से मतलब फाइनेंशियल, इफ दैट स्टूडेंट नॉट सफरिंग इन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर वो चाहता है कि वो जॉब करे, तो यहाँ पे उनको ये कोर्स छोड़ने की अगर मजबूरी है या एनी अदर रीजन अदर देन दैट उनको स्ट्रीम चेंज करनी है, साइंस टू आर्ट्स स्ट्रीम चेंज करनी है, तो भी अगर वो यहाँ पे 1 ईयर क्रेडिट कोर्स करने के बाद अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो ये क्रेडिट कोर्स उनका रिकॉर्ड एकेडमिक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको किसी भी तरह का लॉस यहाँ पे सर्टिफिकेट पर दिखाई नहीं देगा. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिन्होंने साइंस पे एडमिशन लिया है और वो 11th 12th अच्छे से कर रहे थे, लेकिन 11th में ही गेट लेस मार्क. अगर उनको बहुत कम मार्क मिले और उनको पता चला कि अभी हम 12th में पास नहीं हो पाएंगे, तो ही कैन चेंज द स्ट्रीम साइंस टू आर्ट्स. तो ऐसे होता था, तो तब जाके फिर उनको 11 का जो कोई पॉइंट है दैट वाज कंसिडर्ड टू बी एज अ गैप. नहीं तो आर्ट्स के स्टूडेंट अगर साइंस में आते हैं तो फिर से उन्हें 11 to 12 उनको स्टडी करना पड़ता है, तो जो पहले पढ़ाई किए है वो गैप कंसिडर किया जाता था. लेकिन अब से ऐसे नहीं होगा, जिसकी वजह से वो क्रेडिट कोर्स अपग्रेडेड हो जाएंगे और वो आपके सर्टिफिकेट में एनरोल हो जाएंगे. दैट वाज बेनिफिटरी टू स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड पेरेंट्स ऑल्सो. तो यहाँ पे स्टूडेंट को कोई भी लैक नहीं दिखाई देगा. और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर किसी तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम छूट भी जाता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये एजुकेशन सिस्टम बाय फाइनेंशियल आप उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो अगर कुछ दिनों बाद फिर और कुछ साल बाद अगर आपको पढ़ने की इच्छा है और आप फिर एनरोल होते हैं, तो फिर से आपका वो कंसिडर कोर्स किया जाता है। तो दैट वाज अ बेनिफिटरी टू दिस एनईपी 2020। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स दैट इज 4th ईयर कोर्स दैट वाज स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर रिसर्च पर्पज। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट 4th ईयर का कोर्स कंप्लीट करेंगे वो सीधा पीएचडी को एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है, एमफिल जो कोर्स का पॉइंट रखा गया था उसको ड्रॉप आउट कर दिया है और वो यहाँ से पिक्चर से पूरी तरह से निकाला गया है। सो दैट वाज बेनिफिटरी टू अवर एनईपी 2020। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। That was already I was mentions that MPhil was discontinued. In this year, we can easily enroll for a PhD, integrated PhD, and MPhil was removed out from this picture. Next slide, please. So, what was the actually advantage of this national education policy, that is NEP 2020? So here beneficiary point is that academic bank of credit will be established. तो यहाँ पे हमको एक ऐसी बैंक प्रोवाइड कर रही है जैसे में हमारे किसी भी तरह के अगर क्रेडिट है तो वी कैन डिपॉजिट ओवर देयर। तो अगर कौन सा भी कोर्स करोगे तो वो पीछे के क्रेडिट उसमें ऐड होते जाएंगे और जिसकी वजह से कहीं पे भी आपका एजुकेशन गैप नहीं दिखाई देगा। सो दैट इज बेनिफिटरी टू अस। और एक फायदा है दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज विथ आईआईटीएस एंड आईआईएमएस विल बी स्टेप अप्स। तो यहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट को फायदा क्या हो सकता है कि वो फॉरेन कंट्री में भी जाके इजी से अच्छे से एनरोल हो सकते हैं, वहां के कोर्सेस भी ले सकते हैं ड्यू टू दिस एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी उनके साथ पूरी तरह से मैच करती है जिसकी वजह से उनको भी फायदा होगा और हमारे स्टूडेंट को भी फायदा होगा। तो जिसकी वजह से यहाँ के इंडिया के स्टूडेंट अब्रॉड में इजीली जॉब अचीव कर पाएंगे। दैट वाज बेनिफिटरी टू अस आल्सो। Then next point is very much important, that is maintain the equality of both private and public school. यहाँ पे देखा जाता है कि पब्लिक स्कूल में बहुत अलग से पढ़ाया जाता है और प्राइवेट स्कूल में बहुत अलग होता है। तो इसकी वजह से पेरेंट के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि कुछ भी करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है जिसकी वजह से हमारे बच्चे अच्छी तरह से नॉलेज गेन करें। लेकिन अभी ये एनईपी 2020 पॉलिसी एस्टेब्लिश होने के बाद प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट जो है और पब्लिक है उनमें डिफरेंस नहीं रहेगा एंड दैट वाज बेनिफिटरी टू ऑल ऑफ अस। So similarly in affiliations and autonomy colleges, same process are followed. Okay. So next point is very critical point and difficult point. यहाँ की देखा जाए कि हर पॉलिसी अभी स्टूडेंट के ऊपर आ रही है लेकिन ये एनईपी 2020 लेके आया है टीचर के ऊपर भी also. तो टीचर is also mandatory to complete their 4-year B.Ed course फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ दिस ऑक्यूपेशन ऑफ टीचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचर को भी अगर टीचिंग फील्ड में आना है सो ही कैन ऑल्सो फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। दे हैव मेंशन सम पॉलिसीज, तो उनको भी बहुत सारे पॉलिसीज मेंशन किए लाइक कि उनको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, वो उसमें किसी भी तरह का मतलब यहाँ पे भी देखा जाता है कि बहुत सारे सिस्टम में किसी का रेफरेंस दे के एंट्री होती है। तो दैट वाज अ totally nullify or that was not considered in NEP 2020 policy. So this may get the student better teacher for their educations. और इसकी वजह से यहाँ पे हम अगर बच्चों को टेक्निकल और कंप्यूटेशनल नॉलेज दे रहे हैं तो इसकी वजह से वो ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म उनको बहुत अच्छे से मिल जाएगा एंड दैट विल हेल्पफुल दैट स्टूडेंट टू डू जॉब एनीवेयर. So that is beneficiary advantages about this National Education Policy 2020. Now the drawbacks of this National Education Policy, that was first that is problematic to teacher student ratio. क्योंकि अगर सपोज क्लास में अगर कंसिडर करो कि अगर 60 बच्चे हैं और उसमें से कुछ बच्चे हैं जो उर्दू है, कुछ बच्चे हैं कन्नड़ा है, कुछ बच्चों तेलुगु है, तो अकॉर्डिंग टू दैट द टीचर कैन बी मैनेज। तो ये सिस्टम को भी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है कि उस टाइप का टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा और उस लैंग्वेज में फिट हो, उस क्राइटेरिया में भी फिट हो। सो दैट वाज डिफिकल्टी इन बोथ, that is maintaining of teacher and student ratio as well as to finding a better teacher for this. So these are the drawback for these systems. और सबसे आगे देखा जाए तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को हम मल्टी लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं
और जिसकी वजह से अभी हम देखा जाए तो एक और ड्रॉबैक हो सकता है कि वो उनको भाषा में पढ़ेंगे, उनके उनकी मदर टंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि फाइनली दे आर हेजिटेट और फाइनली दे आर फियर टू इंग्लिश, तो दे कैनॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट इज ऑल्सो बिग ड्रॉबैक फॉर दिस सिस्टम्स। अगर हम यहाँ आगे बढ़ के अभी बोल रहे हैं इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में ये करो वो करो, और आगे जाके हमें पता चल रहा है कि अरे बच्चे फिर से वही पॉइंट में आ रहे हैं, बच्चों को वही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अंटिल वो दे गेट बेटर नॉलेज बट दे डोंट हैव दैट मच कम्युनिकेशन, सो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, so that is difficult to students also and community also, and that was a drawback of these systems. Next point is that कि अगर कुछ बच्चों को देखा जाए they have completed their diploma course within 2 years, but some students are facing such a problems like a degree or bachelor degree they have getting 3 to 4 years. So what was the point of that? So अगर 2 year में 2 year के बाद अगर आपको अच्छे से जॉब मिल रही है, so why are you wasting your time 3 and 4 years? So that was a big drawback of these systems. And the next slide is finally the conclusion. Conclusions, according to these systems, many changes have been made, but the discontinuation of MPhil was didn't get it. So that is bit problematic, but still we have lots of problems and lots of drawback of these systems. But I think this Indian policy will take up step for the higher educations that is good for us. So overall the NEP 2020 was better as compared to 1968 and 86 policy. So I was thinking this NEP 2020 was better for all childhood higher education student, and for the other research student that was a better. So therefore I think that was established very well and good for us. So thank you so much regarding this NEP 2020. If you have any query, you can ask me freely. Thank you so much, Smita ma'am. Really, it was very nice and wonderful session that you have given the details about national education policy, and it's a framework you have put in front of us, and you have given the credit system and academic bank of credit and the structure the given by National Education Policy Committee, which has been constructed by the government of India, and really it is a very nice thing for us because national education policy it needs to change because we have changed it in 1986, and after the near about 35 years we are going to change this, and it has been accepted in July 2020 by our government of India. Really thank you so much for giving your valuable talk on the this subject. Now I would like to request honorable Dr. Mallikarjunji Karajgi sir, the Honorable Director of National Service Scheme at Swami Ramanujit Marathwada University, Nanded, for giving wishes to this national seminar series on national education policy, which has been going on from the 1st October to the today's date, 25th October, and this is the last session of this national seminar series. I have my humble request to Dr. Mallikarjunji Karajgi sir for guide us on the national education policy. Welcome, sir. Thank you, Dr. Prabhakar Swami, sir. First of all, I would like to congratulate Sri Chhatrapati Shivaji Shikshan Samsthas Mahatma Phule Mahavidyalaya Kinga, who has organized national seminar series from 1st of October to today, 25th of October, in association with IQAC. The chairperson of this valedictory section, Honorable Dr. B.R. Bodke, sir, who is the principal of the college and our mentor. I am very much thankful to today's resource person, Dr. Smita Sable ma'am, who has presented a very informative talk on NEP 2020, the challenges and opportunities. At last, she has fruitfully
concluded that though there are challenges, NEP is an opportunity for all of us. Thank you, ma'am. And I especially thank the organizer, Dr. Prabhakar Swami sir, who is the coordinator of IQAC of the college. I would like to thank convener, Dr. VG Chavan sir, who is also the vice principal of the college. My friends of Mahatma Phule Mahavidyalaya Kinga, the NSS program officer, Dr. Bharat Badade sir, and the librarian, Dr. Sadashiv Varvate sir, and all the delegates who have joined this online seminar, the colleagues, and all dear friends. First of all, once again, I would like to congratulate Dr. Prabhakar Swami sir and his team for organizing such a long, lengthy, a hectic seminar. Actually, he is organizing this seminar for 25 days, and I know that it is a very difficult task. So that I would like to congratulate who has taken such painstaking efforts in organizing this seminar. As per the guidelines of Ministry of Education, Government of India, and the state government of Maharashtra, UGC and AICT, which has provided some suggestions on how to implement NEP 2020. First of all, I would like to share with you all that Honorable Vice Chancellor, Dr. Uddhav Bhosle sir, who has taken so much efforts, and I am very happy to share with you all that our university is the first university who has taken efforts in implementing this NEP 2020. I am very proud to share with you all that our university has organized 40 taluka level NEP awareness workshops, and the whole credit goes to our Vice Chancellor, Dr. Uddhavji Bhosle sir. Bhosle sir has made us aware through train the trainee workshops in all the 4 districts of this university jurisdiction. And he has formed NEP committee on 9 criterions to decide the way forward of our university. Each member has contributed and suggested some points for effective implementation, considering all our economical, geographical, and social background. Dear friends, now implementation is a challenge. And without the help of the principal, the management, the teachers, we cannot implement it properly. As a teacher, it is our role to take all these things to our students, as we all know that we need the help of all the teachers, because without the help of teachers, it is very difficult task. We cannot reach our students. As we all know that the main center of NEP is our student. NEP has given some guidelines. UGC has also given some guidelines. I request you all to read all those guidelines given by UGC, and I believe that this
multidisciplinary focus is very important. All the students will get the choices. As we all know, Madam has already discussed ABC, Academic Bank of Credit. I request all the teachers to prepare their IDP, institutional development plan. And without that plan, because we all know that in NEP, the concept of clustering of colleges has been introduced. So there should be, or there will be, the networking of autonomous colleges with industry, industry visits, alumni, and there is a challenge of environmental challenge. As we all know that the gross enrollment ratio is below 50%, and in NEP decided we will reach up to 50%. But dear friends, we know that there is a challenge of attendance. The student attendance absentee is more in the classes, and there is a challenge to bring students in our classroom. So what should be done? How should we encourage our student to attend our classroom? So dear friends, we know that we have to change our mindset and set our mind to implement NEP 2020. I believe that whatever the efforts Swami sir and his team has taken will be fruitful. It will help, it will encourage all of us in implementing NEP 2020 in our colleges. With this, I would like to conclude. Thank you one and all. Over to Swami sir. Thank you so much, sir, for your encouraging words to us. It encourages me to organize like this more and more webinars because since from the beginning of the COVID-19, we have organized the first national level webinar on OBS, how to use OBS Studio in May 2020. That time we have faced so many problems while organizing this seminar. But after that, you encourage me, and I'm very much thankful to share with all my dear participants that at my college we have organized 48 national as well as international seminars on online mode, and all are recorded on YouTube channel, Mr. Prabhakar Swami. Thank you so much, participants, and thank you so much, Dr. Mallikarjunji Karaj sir, for your very valuable words on national education policy. Because our Vice Chancellor, Dr. Uddhavji Bhosle sir, he is a very dynamic personality, and he is always he is encouraging to all the professors, teachers, and the parents and students to implementing national education policy for the nicely implementation of it. Thank you so much, Dr. Karasgi sir. Now I would like to request Honorable Chairperson of this national seminar series, Dr. B.R. Bodke sir, for give us the his valuable thoughts and guide us. Dr. B.R. Bodke sir. हेलो यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, अब हमें सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। विशेष रूप से हमारे परम मित्र, हमारे मार्गदर्शक, इस समारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खरजगी सर, उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज
1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का आखिरी दिन है समारंभ। इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शिका डॉक्टर स्मिता साबळे मैम, अन्ना साहेब मगर महाविद्यालय पुणे। इस समारोह कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मल्लिकार्जुन खरजगी सर, संचालक राष्ट्रीय सेवा योजना स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़। इस नेशनल सेमिनार सीरीज का जिन्होंने आयोजन किया और लगातार 24 दिन तक इस सेमिनार को संभाला, इतना ही नहीं, टेक्निकली इश्यूज जो होते हैं, जिन्होंने देखा उस सेमिनार के, जिसे हम कर्ता धर्ता मानते हैं, हमारे महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के और IQC के प्रमुख डॉक्टर प्रभाकर स्वामी, उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे महाविद्यालय की ओर से, महाविद्यालय के नाम से इतने लंबे समय तक ये जो नेशनल सेमिनार सीरीज उन्होंने जारी रखी। इस सेमिनार ने पिछले 24 दिनों में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस फ्रेम पर, उनके कंटेंट पर सभी विद्वज्जनों ने प्रकाश डाला है। नई एजुकेशन पॉलिसी के जो कंटेंट है उससे अवगत कराया है। पिछले 24 दिन जितने भी महानुभाव थे, मार्गदर्शक थे, उनका भी मैं महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज हम इस नेशनल सेमिनार सीरीज का समारोह करने जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार स्वामी को बधाई देता हूं और आज के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर करजी सर ने भी अपने मंतव्य से हमें अवगत कराया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ कंटेंट उन्होंने भी यहाँ पर बताए। मैं जाते जाते समारोह कार्यक्रम में बताने जा रहा हूँ कि मैं भी छोटे से हिंदी अध्ययन मंडल पर सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी जो फ्रेम है, इस फ्रेम में मेजर और माइनर सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा सा बदलाव अभी होने जा रहा है। परसों ही हमारी बात हो गई कि पहले जो माइनर सब्जेक्ट था, तो मेजर सब्जेक्ट से अलग अन्य विषयों से माइनर सब्जेक्ट का चयन करना था, लेकिन अब उसमें बदलाव होने जा रहा है। हमारा जो मेजर सब्जेक्ट होगा वही माइनर सब्जेक्ट होगा, और यह हमारे प्राध्यापक वर्गों के लिए ये अच्छी बात है। जैसे कि हम संचय मान्यता में, पद मान्यता में वर्कलोड का जो प्रॉब्लम आने वाला था, वो यहाँ पर हल होने वाला है, और संचय मान्यता के लिए, पद मान्यता के लिए ये बात अच्छी होगी। बहुत सारे बदलाव आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटा उसके लिए बस नहीं होगा। हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर उद्धव जी भोसले सर, हमारे आदरणीय समकुत कुलपति महोदय, जिनके कर कमलों द्वारा इस नेशनल सेमिनार सीरीज का उद्घाटन हुआ, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय डॉक्टर बिसेन सर, इन्होंने
हमारे यूनिवर्सिटी परिक्षेत्र में जितने भी महाविद्यालय हैं, महाविद्यालय संबंधित प्राध्यापक वर्ग, छात्रों तक ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका फ्रेमवर्क, इसके कंटेंट, इसके बारे में जानकारी होना, ये मकसद सामने रखकर तालुका लेवल, जिला लेवल और आने वाले समय में महाविद्यालय स्तर पर भी कार्यशालाएं होने वाली है। तालुका स्तर तक कार्यशालाएं हुई है, उसकी पूरी जानकारी प्राध्यापक छात्रों तक उन्होंने पहुंचाई है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आदरणीय कुलपति महोदय और समकुलपति महोदय। आने वाले समय में जून 2024 से हमारे विश्वविद्यालय अंतर्गत यूजी लेवल में, क्योंकि इस साल पीजी लेवल में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो भी अभ्यासक्रम है वो जारी हुआ है। आने वाले जून से यूजी लेवल में यह अभ्यासक्रम जारी होगा और इसी अभ्यासक्रम को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सामने रखकर हमारे महाविद्यालय के आईक्यूसी प्रमुख अंग्रेजी के डॉक्टर स्वामी सर ने इतने लंबे समय, इतने लंबे अंतराल में ये नेशनल सेमिनार सीरीज जारी रखा। केवल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी नहीं, तो पूरे भारतवर्ष में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो कंटेंट होते हैं उसकी जानकारी अध्यापक छात्रों तक उन्होंने पहुंचाई है। भले ही हमारा महाविद्यालय देहात में हो, प्रतिकूल परिस्थिति में हो, लेकिन आधुनिक युग की जो विज्ञान, तंत्रज्ञान, इसकी सहायता से उन्होंने ये कार्य किया है। इसलिए बार बार मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार आज के मुख्य अतिथि हमारे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर मल्लिकार्जुन खरजी सर समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज के इस समारोह कार्यक्रम की मार्गदर्शिका स्मिता साबळे मैम, इन्होंने अपने अनमोल शब्दों से हमें मार्गदर्शन किया। उपस्थित सभी प्राध्यापक वर्ग, छात्र पिछले 24 दिनों से बहुत सारे महानुभाव, विद्वज्जन इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अपने महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और समारोह कार्यक्रम का अध्यक्षीय समारोह, इसको मैं अपने शब्दों से पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी विद्वजनों को इस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. बोडके सर जी, आज के इस समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी खरजगी सर और आज के प्रमुख मार्गदर्शक स्मिता साबळे मैम को, आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि यहाँ पर जो पहले दिन के पहले सत्र के जो रिसोर्स पर्सन थे प्रोफेसर मिलिंद जानराव सर जी को, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके हाथों से यहाँ पर देने की आपको विनती करता हूँ। जो कि शेयर किया हुआ है, बस आपको उन्हें बधाई देनी है आपका माइक ऑन करके। इसी तरह से सभी रिसोर्स पर्सन के सर्टिफिकेट, उनके इनविटेशन लेटर और उनके आभार पत्र भी यहाँ पर तैयार है, जो कि आज ही सभी लोगों को मिल जाएंगे। आप सभी से विनती है कि आप आपके माइक ऑन करके सभी को बधाई दे। खरजगी सर, बी.आर. बोडके सर जी, यहाँ पर मैंने शेयर किया है, ये खाली सर्टिफिकेट शेयर किया है मिलिंद जानराव जी का, जो कि पहले सत्र के प्रमुख अतिथि थे। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि यहाँ पर उनको बधाई दे। इसी तरह से सभी लोगों को प्रमाण पत्र और इनविटेशन लेटर और लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाएगा। Okay. Hearty congratulations, Milind Janrao sir, who is the sports coach of KJ Institute of Ayurveda.
and Research, Vadodara, Sauli Vadodara, who was the first resource person of this national seminar series. I would like to congratulate the resource person Milind Janrao sir for sparing his valuable time and enlightened us all. Thank you, Milind sir. थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर बी आर बुड़के सर, आप भी उनको बधाई दिए एक बार. मैं भी पहले रिसोर्स पर्सन मिलिंद जानराव सर को उनका तहे दिल से बहुत बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच सर. मैं आप दोनों का भी बहुत ही आभारी हूँ. आपने यहाँ पर मिलिंद सर को बधाई दी. इसी तरह से सभी लोगों को आज ही शाम को सर्टिफिकेट और उनके लेटर दिए जाएंगे. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस नेशनल सेमिनार सीरीज which has been held on national education policy, that the vote of thanks. First I would like to present my vote of thanks to the honorable principal of my college and my guide, my guru, my everything, because only because of his inspiration, I have organized this national seminar series with the inspiration of my honorable Dr. B.R. Burke sir, the principal of my college. Thank you so much, sir, for giving me an opportunity to organize this long time national seminar series on national education policy. Thank you so much, sir. I am also thankful to the Honorable Vice Principal of my college, Dr. Vittalji Chauhan sir, for being with us for the since the first session. Sir is among us. Sir is always giving inspiration to me to for the organization of this national seminar series. I am very much thankful to the chief guest of this valedictory session, Dr. Mallikarjunji Karasgi sir, for giving his valuable time and presenting here as a chief guest for this valedictory session. Thank you so much. I am very much thankful to the Honorable Dr. Smita Sabre ma'am, the resource person of this last session, for giving her valuable time and giving her very fruitful guidance and fruitful session to us. I am very much thankful to all my colleagues of my college, Dr. Sadashiv Orvate sir, Dr. Bharat Badade sir, Dr. Anand Somuse sir, Dr. Balaji Acharya sir, Dr. Sanjayji Jagtap sir, Professor Kamble sir, Dr. Kanwate madam, Dr. Veernath Humnabade sir. Then each and everyone I am very thankful. I am very much thankful to the non-teaching staff of my college. Those they are always inspiring me, and they are always supporting me for this organization of this long time national seminar series. I am very much thankful to each and every resource person. All the resource persons are presented in this national seminar series. I am very much thankful to each and everyone for supporting us and for giving their valuable time and guiding us and giving a very fruitful talk on the national education policy, this subject, and giving making a grand success to this national seminar series. I am very much thankful to all the dear participants, those who have participated for this national seminar series. I am very much happy to announce that there are 1,348 participants from all over the India for giving their overwhelming response for this national seminar series. And I'm very much thankful to announce that there are near about 2,500 views for this our national seminar series from the all over India. Each and everyone is watching our all this national seminar series on YouTube channel. I am very much thankful to all the dear students of my college for attending this and for inspiring to me for organizing this national seminar series. I am very much thankful to each and everyone of my college and each and everyone participants and all the resource person. Once again, I am very much thankful to each and everyone. And with the permission of chair, I conclude my remarks and announce that this national seminar series has been end. Here is it's the end, but it is not the end, because in the upcoming days we are going to organize a faculty development program FTP on other subject, e-content development. If anybody is interested to participate as a resource person for this e-content development faculty development program, please send your biodata and your sub topic to me.
we are very much thankful to invite you as a resource person for this upcoming program. Thank you so much. Once again, I'm very much thankful to my dear Guru, my guide, Dr. B.R. Bodke sir and Dr. Mallikarjun Karasgi sir for inspiring me, for organizing this such a wonderful program. Thank you so much. Thank you to each and everyone. If anybody wants to give his feedback online in this video conferencing or meeting, they can give their feedback. They can unmute themselves and they can talk. If anybody wants to talk, please. नमस्ते करजगी सर, नमस्ते आदरणीय करजगी सर, नमस्ते. नमस्कार गुरु, नमस्कार नमस्कार सर. अभिनंदन सर आपल्या सर्व टीमचं. खूप खूप धन्यवाद सर. तुम्ही सुद्धा वेळात करून आलात. तुमचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. खूप अभिनंदन सर. खूप छान हा उपक्रम आहे. तुमचं खरं तर लाख लाख आभार. तुमच्यामुळंच आपलं किनगाव हे महाविद्यालय सर संपूर्ण भारतात, सर्व भारतातच नव्हे तर परदेशात सुद्धा व्ह्युअर्स आहेत सर. हो 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 सर आहे. स्वामीचं खूप कष्ट आहे त्याच्यामध्ये, तुमचं मार्गदर्शन आहे. होय होय. नाही सर, मी पण बऱ्याच गोष्टी स्वामी सरांकडनं शिकलो सर. स्वामी सरांनी आमच्या नॅकच्या वेळेस खूप मदत केलेली आहे आम्हाला सुद्धा. आमचेही ऑनलाईन लेक्चर जे आहेत सिरीज अटेंड ऑर्गनाईज करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा मदत आम्हाला झालेली आहे सर. मला खूप अभिमान आहे की आम्हाला असा चांगला माणूस आमच्याकडे आहे. आणि त्याच्यामुळे कॉलेजचं कसं आहे, टीम चांगलं आहे तर कॉलेज चांगलं आहे. नाही खरं आहे सर, खरं आहे. किनगावला संपूर्ण भारतात घेऊन जाण्याचं काम त्यांनी केलंय सर. खूप ऍक्टिव्ह आहे, मेहनती आहे. होय खूप चांगले. होय आमचे चांगले सदाशिव तुमचा सपोर्ट महत्वाचा आहे सर. तुमच्या सगळ्यांचा सपोर्ट मिळतो. वरवटे सर आहेत, बदाडे सर आहेत, चव्हाण सर आहेत, सगळेच टीम आमची चांगली आहे. सगळेच आमची टीम चव्हाण सर्वांचं. येस सगळे चांगले. चव्हाण सर, सोमूसे सर, जगताप सगळेच चांगले लोक आमचे. पण खूप मेहनती स्वामी. पार्टिसिपेंट्स के बीच में से अगर कोई बात रखना चाहे, अपना फीडबैक देना चाहे तो प्लीज आप आपका फीडबैक दे सकते हैं इस नेशनल सेमिनार सीरीज के ऊपर. सभी से विनती है. मिलिंद सर, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो दे सकते हैं. डिगोळे सर बोलत आहेत. डिगोळे सर प्लीज. खरं तर डिगोळे सरांचे खूप आभार, कारण सर पहिल्या सेशन पासून एकही सरांनी सेशन चुकवलं नाही. प्रत्येक सेशन सरांनी खूप खूप छान अटेंटिव्हली अटेंड केलंय आणि प्रत्येक वेळेस सरांचा सपोर्ट आम्हाला राहिलेला आहे. बालाजी डिगोळे सर प्लीज बोला. महात्मा फुले किनगाव आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ हे आपल्या विद्यापीठातलं आमच्या नळेगाव कॉलेज सारखंच ग्रामीण भागातलं महाविद्यालय. पण ग्रामीण महाविद्यालय म्हणायला शहरी महाविद्यालयांना लाजवेल असं 1 तारखेपासून ते आज 25 तारखेपर्यंत विविध विषयांवर वेगवेगळ्या रिसोर्स पर्सनना बोलावून ऑनलाईन आभासी पद्धतीने हे जे विषयाचं ज्ञान आम्हाला बोडके सर असतील, स्वामी सर असतील, या माध्यमातून या महाविद्यालयानं ऑनलाईन हे आभासी पद्धतीने हे सेमिनार, हे चर्चासत्र जवळपास 25 दिवस आयोजित करून न चुकता, त्यानंतर कसल्याही पद्धतीचे ऑनलाईन तांत्रिक अडचण न येऊ देता खूप सुंदर असं वेगवेगळ्या विषयाचं ज्ञान आम्हाला दिल्यामुळं निश्चितच याचा आमच्या अभ्यासाच्या दृष्टीनं, त्यानंतर या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या येणाऱ्या दृष्टीनं विद्यार्थ्यापर्यंत जाण्यासाठी आमच्या ज्ञानामध्ये नक्कीच या ऑनलाईन सेमिनारमुळे 25 दिवसाच्या आमच्या ज्ञानात भर पडलेली आहे. बरेचसे आपल्या महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या स्टेट मधले रिसोर्स पर्सन असल्यामुळे आणि इंग्रजी भाषेमध्ये हे मार्गदर्शन जरी असलं तर त्या मार्गदर्शनामधले 100% माझा विषय मराठी जरी असली, मातृभाषा जरी माझी मराठी असली,
तरी मला फारसं नाही त्यातलं कळालं असेल या 25 दिवसात, तर एकूण आशय आणि त्यामधला भाव नक्कीच माझ्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, हे मी निश्चितपणाने सांगू शकतो. काही हिंदी भाषेमधले सुद्धा व्याख्यान आज झाले. ती व्याख्यानं सुद्धा रिसोर्स पर्सननं जे मार्गदर्शन हिंदी मधलं केलं ते खूप सुंदर मला ऐकण्यासाठी मिळालं आणि अतिशय अनुभव दृढ होण्यासाठी या सेमिनारची मदत आम्हाला मिळाली. म्हणून सर्व पार्टिसिपेंटच्या वतीनं मी महाविद्यालयाचं अभिनंदन करतो. स्वामी सरचे, प्राचार्य साहेब, बोडके सरांचे आणि सर्व त्यांच्या महाविद्यालयातल्या सर्व माझ्या सहकारी स्नेही मित्रांचे सुद्धा मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो आणि मी माझं या ठिकाणी अभिप्राय थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू बालाजी सर. खरंच आपण पहिल्या दिवसापासून आपण उपस्थित आहात आणि प्रत्येक सेशन आपण खूप छानपैकी अटेंड केलात आणि आम्हाला असंच प्रेरणा आपल्याकडून मिळत राहील. धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद. जेनी डेव्हिस, आर यू गोइंग टू स्पीक समथिंग? जेनी डेव्हिस मॅम, प्लीज गिव युअर फीडबॅक ऑन series. Jenny Davis ma'am. Anjani Saraf ma'am, please are you going to speak? Anjani Saraf ma'am, please आप बोलना चाहते हैं क्या? यस सर. जी बोलिए मैम. Yes ma'am. महात्मा फुले महाविद्यालय को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ, स्पेशली प्रभाकर सर को कि सर ने इतने स्पीकर्स को मौका दिया कि वो अपने बात को रख पाए और 25 दिन का जो सीरीज होता है इसको ऑर्गेनाइज करना और इसको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल था और सर जो थे बहुत ही सपोर्टिव थे. मैंने खुद महसूस किया है अपने लिए कि टेक्निकल इश्यूज आते हैं लेकिन उन्होंने किस तरीके से इस चीजों को शॉर्ट आउट किया. तो मैं प्रभाकर सर को स्पेशली बधाई देती हूँ. महात्मा फुले महाविद्यालय जिसको लोग कह रहे हैं कि थोड़े से गांव एरिया में है लेकिन किस टेक्निकल सपोर्टिव पर्सन के थ्रू जो है हम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सारा सेशन था. मैं कईयों को अटेंड किया मैंने. तो बहुत बहुत बधाई सर और महात्मा फुले महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों को सीखना चाहिए इस महाविद्यालय से. जी थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू अंजनी मैम. आपने भी बहुत अच्छा से आपका सेशन अटेंड किया था. आपने बहुत अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन दी थी, इसलिए हम आपके भी बहुत आभारी है. अब मैं डॉक्टर वेंकटेश सर बात रखना चाहते हैं. उनसे विनती है कि आप बात रखें. डॉक्टर वेंकटेश सर. Yeah, thank you. I'm no PhD still, but anyway, thanks for that adjective which you have used for me. But that's okay. It's absolutely fine. And this was one of the best experiences for having spoken to the audience of Mahatma Phule University, and it was well organized. And the varied topics was one thing which actually attracted my mind, which held me continuously connected to the series of webinars, and it was one of the best experiences, well managed, well programmed under the leadership of Dr. Prabhakar. Under Dr. Prabhakar Swami. So it was, and of course the leadership team also was connected to the series very, very well. The principal and the librarian, the co-convener of this one. It was all very nice, and I especially appreciate the series of the varied series of topics which were selected, which were connected to the teaching fraternity, the teaching student, the student community. It was a wonderful experience. Thank you so much for making me a part of this particular mega series of webinars. Thank you very much.
Dr. Prabhakar. Thank you so much, sir, Venkatesh sir. Thank you so much for your inspiring words. Thank you. Now, Hello, sir. Namaste. yes, sir, yes, sir. Our next webinar program is conducted for digital library and e-resources. You have make do that wonderful topic there. That's why asking for humble requested for. Excuse me, sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Thank you. thank you, sir. Thank you. Jenny ma'am, are you there? हाँ वरवटे सर बोलताय का तुम्ही? हॅलो. Swami sir, I think someone has raised his or her hand to express feedback. Will you check? Yes, I am checking, but name is not there. What? No. Dr. Vittalji Chauhan sir. Dr. Vittalji Chauhan sir, please. Swami sir, I think Upasana Andotra Hello, has raised Upasana hand. Andotra, please. Please speak. Hello. Okay, sir. Okay. We will finish this meeting. Thank you so Okay. much to each and everyone for giving your very valuable feedback and inspiring us to organize such a nice, wonderful sessions in upcoming days. Thank you so much to each and everyone. My Honorable Principal Dr. B.R. Bodke sir, the Chief Guest for the Valedictory session, Dr. Mallikarjunji Karasgi sir, and the Chief Guest of the Resource Person of the Valedictory session, Dr. Smita Sabre madam. Thank you so much to each and everyone for giving your valuable time and making a grand success to National Seminar Series, which has been organized from 1st October to 25th October. With the permission of Chair, I conclude this meeting.